हेलो गाइस, ओमान के मस्कट शहर के कुछ बीचेस पर मालदीव्स के बीचेस की तरह से बायोलुमिनेसेंट की एक बहुत ही अमेजिंग फिनोमेना होती है। इस अमेजिंग एक्टिविटी को देखने के लिए रिसेंटली मैंने एक हाफ एन आवर का बोट टूर लिया। आई इनवाइट यू टू जॉइन मी ऑन दिस एडवेंचर एंड सी हाउ द सी वाटर एट सम बीचेस इन ओमान टर्न्स ब्लू। अभी मैं हूँ मस्कट के कंताब बीच पे, जो कि इस एक्टिविटी को देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ और इस एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमने ओमान के एक बहुत ही फेमस टूर गाइड जिनका नाम है मोहम्मद अल हादी, उनको प्राइवेट टूर के लिए हायर किया हुआ है। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगा, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमें रात के 8 बजे का स्लॉट मिला हुआ था, जिसमें 30 मिनट्स की बोट राइड है और सामने ये हमारी बोट आ गई है। हालांकि जैन फेब के महीने में मस्कट में थोड़ी ठंड होती है, बट सिंस वी आर गोइंग ऑन अ बोट राइड इट इज़ रिकमेंडेड कि हम शॉर्ट्स पहन के जाएं वहाँ पे। हालांकि मस्कट के कुछ बीचेस पे बायोलुमिनेसेंस का ये एक्टिविटी जो है विजिबल होती है, बट बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए दिस बोट राइड इज़ हाईली रिकमेंडेड। सो बोट पे जाने का समय हो गया है। कम जॉइन मी टू एन्जॉय दिस एक्सपीरियंस नाउ। यहाँ पानी इतना साफ़ है कि नीचे तक क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ऑफ वी गो, द बोट राइड हैज़ स्टार्टेड। बोट राइड शुरू होने के 2-3 मिनट के बाद ही वी स्टार्टेड विटनेसिंग द ब्लू शेड्स ऑफ सी वाटर। द बोट वॉज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द साइड जहाँ पे दिस इज़ विजिबल मोर क्लियरली। And within 10 minutes of starting our journey, this is what we started witnessing. The secret behind this magical display lies in the microscopic sea organism called plankton that possess the remarkable ability to produce light. When they are disturbed by the movement of waves or the gentle touch of our hands, these planktons emit a dazzling blue colored glow, painting the sea with the streaks of luminescence. Our tour guide Hadi took us to some cool spots where the planktons were high in numbers and the blue color display was very fascinating. This particular spot is near the Shangrila Hotel. Other beaches where you can see this bioluminescence are Al Sifa, Bandar Al Khairan and Yiti beaches. This combination of red color of boat light and the blue streaks is looking so magical. Frankly, I feel the camera is not doing justice to capture this moment. The magical red, green and blue colors in the dark black background of the sea is definitely an unforgettable experience. Yeah, that's the arch. Here, after spending some time, it was time for us to move to the next spot. This is the second spot of umairah Muscat Bay Area where Hadi has taken us. Here also blue color plankton streaks are visible quite clearly. The experience of watching this activity in the background of the dazzling coastal hotels is something difficult to explain in words. The enchanting glow of the bioluminescence reminds us of the inspiring power of the nature and the hidden wonders that lie beneath the surface of the sea. It was now time to return back to the beach. During this entire trip, we kept playing with the water, letting our hands disturb the planktons to emit the blue colors. The bioluminescence in Muscat is not merely a visual delight, it is also a testament to the delicate balance of nature. These tiny organisms play a vital role in the marine ecosystem, and their presence is an indicator of the health and vitality of the sea.
We are now reaching near the beach. I hope you would have enjoyed this short trip to witness this magical experience. January till March is the best time to see this amazing activity. If you are visiting Muscat during this time, then don't forget to experience this. Thank you for watching and stay connected to watch more such entertaining vlogs.